Student, in the last video you have seen how to find the particular integral by the shortest method. Okay, today I'm going to start method by which general method by which you can find any type particular integral of any type of function. Okay, so now let us take the method B like this type. General method to find particular integral. Sorry. If the given partial differential equation is of this type, show particular integral is equal to 1 upon f d d d dash f of x y, where d and d dash are the degree of d and dash are of nth degree. Okay, students, it means the left hand side f d d dash is homogeneous of degree n. Okay, now if d and d dash be the homogeneous, so the particular integral may be of this type. If the function right hand side fxyb is of this type, phi of ax plus by, this shows that right hand side phi xy, मतलब ये हुआ कि फंक्शन राइट हैंड साइड या तो इस फॉर्म का हो या तो साइन ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म का हो, कास ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म का हो, या ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म का हो। कभी भी इस तरह का फंक्शन दिया गया हो राइट हैंड साइड, तो हम इस जनरल मेथड का यूज आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बता रहा हूं। इफ द राइट हैंड साइड is a function of ax plus by, this function, it may be either exponential or trigonometrical or any other, so we can use this method, this general method. Okay students, so now how to apply, यहां हमने आपको बताया कि d और d डैश होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n में। इस केस के लिए आप जब कभी भी इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो आप लिखते हैं 1 अपॉन एफ ए बी इंटीग्रेशन ऑफ फाई यू डी यू कहां तक, nth टाइम्स। ये ज्यादा बेहतर तरीके से जब समझ में आएगा बच्चों, जब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराया जाएगा।
अभी इसके जस्ट बाद मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। यहां वेयर u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। सो अभी आपने क्या देखा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बताया जाएगा जिसमें आप फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू ए एक्स प्लस बी वाई को u चूज करेंगे और इस u के बिहाफ पे आप फाई u को फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद आप सॉल्यूशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज ए जनरल मेथड, दिस इज जनरल मेथड। Okay students, so now I am going to tell you some examples based upon this. Previous video you have seen how to find the solution by finding their particular integral. Let us take some examples based upon this. Example, let us take solve एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सॉल्व डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 3 डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस यू कैन लेट 2 प्लस 2 डेल टू जेड अपॉन दिस शुड बी डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस 3y। जस्ट सी स्टूडेंट, just see here e to the power 2x plus 3y. Just see here. So what should you do? Solution be like this. Since right hand side is given, previous में इस तरह के क्वेश्चंस आपको बताए जा चुके हैं। उस मेथड का यूज करके जो रिजल्ट आएगा और इस मेथड का जो यूज करके जो रिजल्ट आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों ही केस में समान होगा। इसके लिए हम आपको प्रीवियस में बताए गए मेथड का भी यूज करके दिखाते हैं और अभी जो मैंने बताया वो उसका भी यूज करके हम सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के दिखाते हैं, दोनों में क्या समानताएं हैं। सॉल्यूशन इज बी ऑफ दिस टाइप, गिवन दैट del 2z upon del x square plus 3 del 2z upon del x del y plus 2 del 2z upon del y2 which is equal to e to the power 2x plus 3y. Convert this equation into this form: d square plus 3d dash plus 2d dash square z equal to e to the power 2x plus 3y. Okay, now to find the solution of this, let us take for this first and solution of this to find CF complementary function. Let us find the auxiliary equation be by putting d replaced by m and d dash replaced by 1. So this becomes m 3m plus 2 equal to 0. So now from here this becomes m plus, I think it becomes 2 m plus 1 इक्वल टू 0। इनका फैक्टर करने के बाद आपको ये वैल्यू फाइंड आउट होगी m plus 2 और m plus 1 and after multiplying you will find this result. So from here the roots be -1 -2. This is real and distinct. So CF is equal to f1 y minus x plus f2 y minus 2x. CF is equal to f1 y minus x plus f2 y minus 2x. This is the value of CF. Okay, so how to find the PI also?
To find the pi, let us now pi be 1 upon f d dash. It means that d square plus 3d dash plus 2d dash square plus 2d dash square e to the power 2x plus 3y. Okay students, e to the power 2x plus 3y, e to the power यहाँ लिख लें, आप इसको यहाँ लिख लें, पर्टिकुलर इंटीग्रल नाउ पी आई बी 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर into e to the power 2x plus 3y. As you know, to find the particular integral, we will replace d by a and d dash by b. So now this becomes 1 upon 2 square plus 3 into 2 into 3 plus 3 square e to the power 2x plus 3y. So now from here, this is a 2 square is 4, 3 square is 9, 14, and 3 to 6, 3 to 18, 18 and 14 becomes ये हो जाएगा 8 4 12 और 22 10 32 1 upon 32 1 upon 32 just see here 2 to 4 3 to 6 3 ja 18 18 and 4 22 and 9 9 22 18 and 4 8 4 12 22 और 9 31 होगा 31 सॉरी 31 होगा e to the power 2x plus 3y. 9 4 the 30, 9 4 13 and 18 equal to 31. So this is the pi. So combined solution is the solution of equation first be show the solution of equation 1b Cs is equal to Cf plus Pi. It means that Z equal to Cf. Cf is here F1 y minus x plus F2 y minus 2x plus Pi. Pi is here I think 1 upon 31 e to the power 2x plus 3y. Okay students, so just see here, this is the complete solution. The pi is here this. Now this pi can be found by another method which is known by general method. So I am going to tell you second method to find pi. दूसरा मेथड है pi निकालने का, क्या है? अगेन pi इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस d डैश स्क्वायर e to the power 2x plus 3y. Okay students, so now from here by this method first put 2x plus 3y is equal to u. 2x plus 3y is equal to u. So this becomes e to the power u. So this becomes e to the power u. So then after from here and d replaced by a 2 square plus 3 into d 2 into 3 plus 3 square, and then since this is a homogeneous partial differential equation of degree 2,
d and d dash. The degree of d and d dash be 2. Since it is homogeneous in d and d dash, so this is quadratic equation. So integrate this equation 2 times by putting 3x 3 sorry u equal to 2x plus 3y. Put u equal to 2x plus 3y, this becomes this. Now as you know, the integration of e to the power u is also e to the power u first time, and second time integral is also e to the power u. So in place of this we will put, this is 4 plus 18 plus 9 e to the power u. The integration 2 times of integral of e to the power u be e to the power u. So from here this becomes 30, again 31 e to the power u, and u be here 1 upon 31 e to the power 2x plus 3y. So स्टूडेंट, आपको ये लॉजिक बताया गया कि चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकाल लें, शॉर्टेस्ट मेथड से, या इस मेथड से जनरल मेथड से पी आई निकाल लें, दोनों मेथड से पी आई वही आएगा। इस तरह से आपने इस वीडियो लेक्चर में पी आई निकालना सीखा एक जनरल मेथड से। अगला जो कंटेंट होगा, हम एक एग्जाम्पल और इस पर बताएंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एग्जाम्पल होगा, उसको आप ध्यान से देखें। अब आपको यहाँ दो मेथड पता चले पी आई निकालने के। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। Just see here, solve example 2 for this. Solve. Okay students, del 2z upon del x square plus यूँ ले लें 4 del 2z upon del x del y plus 4 del 2z upon del y2 equal to sin 2x plus 3y. Just take it sin 2x plus 3y. Okay students, इस तरह के प्रॉब्लम भी आपको दूसरे मेथड से पढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन आज मैं एक जनरल मेथड जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो मैंने बताया, उस पर बेस्ड मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको निकाल के सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। सो हाउ टू सॉल्व इट? सॉल्यूशन इज ऑफ दिस टाइप। राइट डाउन गिवन दैट del 2z upon del x square plus 4 del 2z upon del x del y plus 4 del 2z upon del y2 is equal to, just see here, sin 2x plus 3y. And now convert this equation into this form: d square plus 4dd dash plus 4d dash square z equal to sin 2x plus 3y. Okay students, so write down this be first equation. You know very well the complete solution of this equation be complementary function as well as their particular integral. After adding these two, you will get the final solution. Okay, so now I am going to try to find their CF. So to find CF, the auxiliary equation can be auxiliary equation लिखा, जो लिखने का है वो क्या है? Auxiliary equation can be written by replacing d by m and d dash by 1. So d is m square plus 4m
plus 4 equal to 0. So I think its value becomes m minus m plus 2 whole square equal to 0. So this becomes m equal to minus 2. It means this is a real and equal. The roots of the auxiliary equation are real and equal. And you know very well, their CFB f1 y minus 2x plus x f2 y minus 2x. This is a CF. Okay students, this is second equation. How to find the PI in general method? Now PIB, now PI is equal to, okay, PI equal to 1 upon d square plus 4dd dash plus 4d dash square sine 2x plus 3y. By the shortest method, you know very well, d square replaced by minus a square, d dash replaced by minus ab, and d dash square replaced by what? Minus b square. So now from here, by this method, this becomes minus 2 square plus 4 into minus 2 into 3 plus 4 into minus 3 square, and this is a sine 2x plus 3y. Okay students, so now after solving, the particular integral becomes, so now pi is equal to 1 upon minus 4 minus 2 square, not minus 2 whole square. This is a minus 2 square, so its value is a minus 4. Okay, plus 2 3 ja 6, 6 4 ja 24. So this is minus 24. So now this is minus 24 minus again 4 minus 3 square becomes 9, and 9 4 are 36. So minus 36. This becomes sine 2x plus 3y. Okay students, sine 2x plus 3y here into sine 2x plus 3y. Okay, now from here its value is just see 36 and 440 and 260 means minus 64 sine 2x plus 3y. This is the value. It means that we can write 1.64 sine 2x plus 3y. Now show CS is equal to CF plus PI. CS is equal to CF plus PI. So now CS Z equal to CF F1 y plus minus 2x plus x F2 y minus 2x plus minus 1 upon 64 sine. So this is the solution of equation first. This is the solution of this equation, and just I am going to tell you how to find this pi by the another method, by the general method, by the general rule. Okay students, so now the next second method to find pi. एग्जाम में आप किसी एक मेथड से ही करेंगे, दोनों मेथड का यूज नहीं करेंगे, राइट? सो नाउ PIB
1 upon d square minus plus 4dd dash plus 4d dash square sin 2x plus 3y. Okay, students. Now, how to find? It can be found by the previous general method. D replaced by A, D dash replaced by B, and since this is a homogeneous partial differential equation is of second type, degree 2, so it can be 1 upon 2 square plus 4 into 2 into 3 plus 4 into 3 square, and the integration sin u du. It is of 2 times because of this is second degree. So here by putting u equal to 2x plus 3y. By putting u equal to 2x plus 3y. So now after integration, just see 2 to the 4 plus 4 to the 6 3 ja 18 plus 3 3 ja 9 4 ja 36, and integration of first time integration of sin u be minus cos u. Okay, you know very well, because of differentiation of sin x be cos x, and differentiation of cos x be minus sin x. So now from here integration of sin x u be minus cos u, and minus integration of minus cos u be minus sin u. So now its whole value becomes minus sin u. So by this way, this is minus 1 upon, this is again I think 64. You can calculate now. 36 and 4 40. Just see, some from 4 to the 8 3 ja 24, not 18. This should be 24. So 36 and 4, 40, 20, 64, and this be sin u, and by put the value of u, by putting value of u, this becomes sin 2x plus 3y. बच्चों, आपने ऐसा पाया कि आप चाहे शॉर्टेस्ट मेथड का यूज करें या जनरल मेथड का यूज करें, आपको रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा. आपने यहाँ से भी पर्टिकुलर इंटीग्रल वही फाइंड आउट किया जो आप डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट किए थे. -1/64 sin 2x plus 3y. Okay, students. So now in the next video lecture, I will tell you how to find the next such type of problem, how to solve the such type of problem by the another way. आप देखेंगे. तो आज बस यहीं तक. ओके, थैंक यू.